Atma Namaste, everyone. I welcome you all to the session of Tea Time with our special guest. Today we have with us Adit Raul, who is who is a certified pranic healing healer and a instructor. Aditya is well known certified pranic healer and an instructor. Beside pranic healing, he is master in biochemistry with advanced diploma in food science and quality control. He is also a nature lover. His center has a lineup of activities planned through the year which aims to bring people closer to mother nature. Since 2018, he and his team has adopted more than 500 trees and have planted 7,000 seed balls successfully. Aditya has a strong belief in the prayer of St. Francis of Assisi, which is often used by our beloved teacher, Grandmaster Chow Kok Sui. And luckily, today's topic is the understanding of the prayer of St. Francis of Assisi. So, without wasting my time, I hand over the session to Aditya. I welcome Aditya to our session. Aditya, you can unmute yourself. Yeah. First of all, thank you, Prerna and entire team for inviting me to this gathering. I hope the session can be conducted in Hindi as well as in English. Will that Yeah, be sure. okay? Yeah. So I would like to have the session little more interactive. So you can type your yes comments in the chat section so that I feel the session is more active and interactive especially. So we will begin with short invocation prayer. So keep your palms open, close your eyes, slowly inhale and slowly exhale. Slowly inhale and slowly exhale. Be aware of your whole physical body. Be aware of your emotions and thoughts. Silently say to the Supreme God, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, we humbly invoke for divine guidance, divine love, healing power, help, and divine protection. With thanks and in full faith, we thank you. Take a deep breath and gently open your eyes. Good evening. Atma Namaste to all of you. So since this session is open to all, I would like to know how many of you have know about the prayer of Saint Francis. Anyone knows about this prayer? You can just type yes in the comment if you can. So ये जो प्रेयर के बारे में आज हम लोग जानना चाहते हैं, वो प्रेयर सभी को मालूम तो है, ये पहले मुझे जानना चाहिए. Yeah, most of you are familiar with the prayer since we are practitioners of twin heart meditation, right? आप में से कई सारे लोगों ने, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, ये प्रेयर फर्स्ट टाइम सुनी थी जब हम लोग ने ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन किया था. When Master Choa asked us to keep our hands in the blessing position, and then he says, let us pray with the prayer of Saint Francis of Assisi and bless the Mother Earth. So today we will be trying to understand the significance of this prayer in our twin heart meditation. How the understanding will change the intensity of your meditation. Okay, those who have learned in English medium schools or convent schools, they might be praying from their childhood this prayer of Saint Francis, right? आपके स्कूल में आपको शायद ये प्रेयर बताई गई होगी, बट हमने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया कि
कि प्रेयर तो कराया जाता है इसलिए किया है, but when we have learned Twin Hearts meditation, master has given the technique how to use the prayer in the form of meditation. Like Master Choa has a unique way of teaching pranic healing through which we can get to know the significance of religious practices which make us more spiritual. So one of the prayer which is universal is also called as prayer of Saint Francis. तो ये जो सेंट फ्रांसिस थे वो कौन थे? ऑब्वियसली एक क्रिश्चियन सेंट थे, बट उनकी स्पेशलिटी ये थी, he was able to talk and communicate with non-human beings like plants and animals. He can easily use to communicate with them, and there are so many popular stories about him. I would like to narrate two of them right now, which are available on the internet as well. So there was this case when he was roaming in his garden, and he has just sent a beautiful rose. एक रोज फ्लावर देखने के बाद उनको उसको छूने की इच्छा हो गई, and he just touched the rose, and unfortunately he had also touched the thorns. उनको prick हो गया. So he was so compassionate and kind that he just prayed requested the tree कि आपके इतने ब्यूटीफुल रोजेस है, बट ये जो थॉर्न्स है, कांटे हैं, वो मुझे लग रहे हैं. सडनली जो भी रोज प्लांट था उसने ये सारे कांटों को छोड़ दिया. इट ड्रॉप्ड ऑफ इट. सो दैट वाज द पावर ऑफ सेंट फ्रांसिस. ही वाज एबल टू कम्युनिकेट टू द प्लांट्स, और प्लांट्स उनकी बातें सुनते थे. देयर वाज दिस केस अबाउट द विलेज, कि जो विलेज में एक फॉक्स आके पूरे विलेजर्स को बहुत तकलीफ दे रहा था. सो लोगों को पता नहीं चल रहा था अभी इसके साथ क्या किया जाए, ये फॉक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए. सो दे heard about the saint of who can talk with plants and animals, so they invited Saint Francis to their village. सेंट फ्रांसिस ने वहां पे टाइम स्पेंड करके वो फॉक्स को एक बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और फॉक्स को कम्युनिकेट करके बताया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है वो बताइए. फॉक्स ने अपने प्रॉब्लम्स बताए. वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज ही वाज नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड. सो जो सेंट फ्रांसिस थे उन्होंने सारे विलेजर्स को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप इनको रेगुलर फूड की व्यवस्था कर सकते हैं. तो विलेजर्स एग्री हो गए कि हाँ बाबा, हम लोग करेंगे एफर्ट्स और फॉक्स के लिए खाना बनाएंगे. And they used to feed that fox. Gradually it became pet to the village. So जो फॉक्स का प्रॉब्लम था, जो तकलीफ हो रही थी, वो सेंट फ्रांसिस ने सॉल्व कर दी विदाउट एनी इंजुरी. यूजुअली गांव में अगर ऐसे कोई वाइल्ड एनिमल घुस जाता है या फिर स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं, तो नॉर्मल टेंडेंसी हमारे यहाँ पे क्या होती है, उसको मार दो और प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. What I want to highlight from these two stories is about the loving kindness. The saint was full of love and compassion that he could able to communicate to the plants as well as animals who understand the language of love. और इसी संतों ने ये प्रेयर लिखी है, प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस. तो जब मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स किया जाता है तो उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट पार्ट है, वो हम लोग यूज करते हैं. देयर इज अनदर स्टैंजा, अनदर पैराग्राफ टू दिस प्रेयर which master usually do not take in the twin hearts, but today we will try to understand it. So far are we communicating? You can just show thumbs up. Very good. So ये prayer start कहाँ से होती है? The prayer starts with the sentence line called as God make me an instrument of your peace. Right? So this is the first important line which we have to understand. What does it mean? इसमें एक keyword है, that keyword is called as instrument. Now when I say instrument, what do you understand from this word? You can type your answers in comment or you chat. जब मैं instrument करके बोलता हूं तो आपके मन में instrument करके क्या आता है? Carrier of peace, vehicle, medium. Very good. Messenger, representative, medium. Fantastic.
Now I will turn this question slightly to the musical sense. Musical लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे तो आपके दिमाग में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? या somebody said flute. Any other instrument? Piano, harmonium, tabla, sitar, veena. Correct? Fantastic. Fantastic. Your answers in chat shows me that you are active in the session. Fantastic. Now, the next question, if I say I want to play harmonium in the morning, it will give me sargam. I will play harmonium in the afternoon, again it will give me sargam. I will play harmonium in the evening, again it will give me sargam. तो कभी भी मैं हारमोनियम बजाऊंगा उससे क्या निकलेगा? सुर बाहर निकलेंगे, सा रे ग म प ध नी, राइट? उससे कभी भी रिदम बाहर निकल सकता है क्या? लाइक तबला से निकलता है धा धा धिन धा, कभी भी आप सा बजाएंगे तो आपको धा मिलेगा, धिन मिलेगा? नहीं मिलेगा. So that is the sense we can apply to our prayer. Master says, make me an instrument of your peace. Now imagine you are that instrument and you are instrument of peace. So आपको कभी भी बजाएंगे तो आपके अंदर से क्या बाहर निकलना जरूरी है? क्या निकलना जरूरी है? Fantastic. It is peace. Okay, so peace is the basic requirement to become a happy person, a spiritual person. किसी आध्यात्मिक पर्सन को आप आध्यात्मिक कब बताएंगे? जब उनके चेहरे के ऊपर, जब उनके हाव भाव में आपको शांति महसूस होगी. यस और नो? कोई संत, आपका संत का पिक्चर आप देखते हो, पहली चीज आपको वो पिक्चर से क्या मिलती है? वो है पीस, right? So all saints are saint because they have this inner peace. They are internally peaceful. Shanta Swarup. Perfect. Calmness. So in the first line, when we activate the heart, when we activate the ground, and now we are going to bless the earth, we are going to bless the earth with inner peace. Okay, another keyword is inner peace. Internally you are peaceful, externally you may be slightly in different emotion. Take example of the ocean. ओशन जो सीशोर होता है, बीच होता है, वहां पर वेव्स रहती है, बट जो मिडल ऑफ द ओशन होता है वो हमेशा बहुत शांत रहता है. या फिर जो डेप्थ होता है सी का, निचला पोर्शन होता है, काफी शांत होता है, वहां पे पानी बहुत शांत होता है. तो ऐसी हमारी मन की स्थिति अपेक्षित है जब हम लोग प्रार्थना करेंगे. Okay, today we have a very short of time, otherwise we could have practiced it, but whenever you practice Twin Hearts, take some time and think about the inner peace, feel about the inner peace, and then start the prayer, start the meditation. What is the second line? Master next says, where there is hatred, let me sow love. Right? So when you are peaceful, automatically the action or the feeling comes next is love. अगर आप गुस्से में हो, आप अशांत हो, तो आप प्यार नहीं दिखा सकते, बट जब आप शांत हो, प्यार करना आसान हो जाता है. Yes or no? So the energy that flows through you is transmuting or transforming hate into love, and that love originates from your heart. The third line says, where there is injury, pardon. So it's a ladder. So if you see the state of emotions, gradually, as you are peaceful and loving, can you forgive now? Answer is yes. Yes or no? When you have grudges, when you have anger for someone, when you have lot of hate about someone, it means you are internally not at peace. तो आपके अंदर शांतता नहीं है, आपके अंदर प्यार नहीं है, आपको फॉरगिवनेस करना पॉसिबल नहीं है. सो रेसिपी
or formula for forgiveness is what? Inner peace plus love is equal to forgiveness. यहाँ पे मास्टर बोलते हैं अगेन इनर फॉरगिवनेस, द स्पिरिट ऑफ रिकंटिन्यूएशन. Are we correlating these lines? Fantastic. The next part, after that, master says where there is despair, hope, doubt, faith. Right? So what is despair? Despair मतलब निराशा. और दूसरा पार्ट है डाउट. निराशा की जगह हम लोग आशा लाने की कोशिश करेंगे, और जहां पे संशय है वहां पर विश्वास लाने की कोशिश करेंगे. Now imagine you are internally at peace, you are loving and you are forgiving. आपके साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है, आपने किसी को हर्ट किया या फिर आप किसी वजह से हर्ट हुए हो, ये सारे पास्ट फीलिंग्स को आपने छोड़ दिया है. तो आप अब मुझे बताइए कि आप निराश हो सकते हैं क्या? The chances of getting in despair are less. The effect of the above three emotion is transmuting that automatically your mind shifts from despair to hope. आप ऑटोमेटिकली होपफुल हो जाते हो. जैसे कि एग्जाम्पल, कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों के करीबी लोग उनकी डेथ हो गई, उनके साथ नहीं रहे. That is so much discouraging, that is so much of pain, emotional pain. Yes or no? अभी वो सिचुएशन में अगर किसी ने सेंट फ्रांसिस की प्रेयर करना शुरू किया, ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करना शुरू किया, और जिसका मन शांत हो गया है, इंटरनली पीसफुल है, उसके अंदर प्यार है, जो उसने फॉरगिव कर दिया. कई बार हम लोग हमारे नसीब को भी फॉरगिव नहीं करते, भगवान को भी कोसते हैं या फिर नेगेटिव बोलते हैं कि लोगों की वजह से, लोगों की गलतियों की वजह से आज मेरे ये लाइफ में कंडीशन हो गई है. बट मैंने उसको भी माफ कर दिया है. देन आई विल बी होपफुल कि मैं कुछ नया हासिल कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ नई चीजें हो सकती है. आई विल बी सक्सेसफुल. दैट इज होप. व्हेन यू आर होपफुल, द कंडीशन अराइजेस टू द फेथ कि यस, देयर विल बी सम पावर, supreme power, which we say God, is continuously governing me, energizing me, so that I will be walking on the right street, right path towards the success. So when we bless, we are blessing with hope, the entire earth with hope and with faith. वहां पे मास्टर एक चीज एडिशन करते हैं, बोलते हैं कि जो लोग दुनिया में निराश है, जो लोगों के लाइफ में तकलीफें चल रही है, आप उन्हें बोलिए यस यू कैन डू इट. राइट? डू यू रिमेम्बर दीज लाइन्स? सो जब हम लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं, इंटरनली वी यूज दीज वर्ड्स, वी आर एक्चुअली गिविंग द राइट अफर्मेशन, राइट प्रोग्राम, not only to the universe, not only to the people from earth, but to the self. और ये सारी चीजों का आउटकम क्या निकलता है, देखिए द नेक्स्ट लाइन, where there is sadness, joy, where there is darkness, light. So automatically आप खुशी से joy energy में चले जाते हो, and finally there will be light. What do you mean by illumination? Illumination means experiencing divine light. So when you cross all these lower emotions and gradually come up to the higher emotions, like up to the crown chakra, and you get explosion. The illumination feeling comes when you do proper blessings. It has tremendous transmuting effect on our aura, transmuting effect on different chakras and different subtle energy bodies, कि हमारे एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी नेगेटिवली चार्ज होती है, वो पॉजिटिव चार्जेस से रिप्लेस हो जाती है. एज अ रिजल्ट आवर कॉन्शियसनेस एक्सपांड्स टू द हायर लेवल. ओके, इसके आगे की भी प्रेयर है, वो मैं आपको शेयर स्क्रीन करके. ओ प्रेरणा, कैन यू गिव मी द शेयर स्क्रीन राइट्स?
Okay, not a problem. I'll just read it for all. So the next lines are, O divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. So इन सभी का मतलब ये है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे दूसरों को समझाने की, दूसरों को प्यार करने की इतनी शायद समझ नहीं होगी, बट मुझे ये सारी चीजें करनी चाहिए, मैं करना चाहता हूँ. So because it is in giving that we receive. जो मैं दूसरों के साथ करूंगा वही चीज मेरे साथ भी होने वाली है. अगर मैं दूसरों को माफ करता हूँ, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. So it is in dying that we are born to eternal life. इसका मतलब है हम क्षण क्षण में हमारी डेथ हो रही है, क्षण क्षण में हमारा नया जीवन भी निकल रहा है. बिकॉज कल हम लोग ने जो नेगेटिव थॉट बनाया था, आज अगर हम लोग ने उसे छोड़ दिया, वी आर अ डिफरेंट पर्सन. व्हेन वी ब्लेस द अर्थ, वी लीव बिहाइंड द नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स. We leave behind the negative emotions and negative thoughts. As a result, what happens? We are born a new being. So this is the prayer, the second paragraph. Yeah. Some government hotel. Okay, so we have another 8 minutes. If you want to ask something, you may ask. Sir, please repeat the second part in short. I couldn't get it. Okay, बताता हूँ. In short, इसका मतलब ये है कि किसी को समझाना, किसी को प्यार करना, या फिर किसी को माफ करना, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हम लोग खुद से स्टार्ट करेंगे. अगर हम खुद को समझा सकेंगे, अगर हम खुद के ऊपर प्यार कर सकेंगे, खुद को क्षमा कर सकेंगे, तो ही हमें दूसरों के लिए ये सारी चीजें करना आसान हो सकता है. Okay, right, sir. Thank you. Sir, Atma Namaste, sir. I had this question that how to differentiate between self-love or we are massaging our ego. I mean, how do we get that we are genuinely loving ourselves as a soul, not just, yeah. Okay, so my teacher says self-love is equal. Can you mute yourself, please? Sorry. Okay. So my teacher says self-love is also known as good self-esteem. Self-love means what? कि आप खुद के positive points को ही नहीं देखते हो. You accept yourself as you are, including your weaknesses. So you know this is my strength, but at the same time you know these are my weaknesses. So when you appreciate yourself as you are, that means you are developing self-love. It is also known as good self-esteem. ईगो में क्या हो सकता है? That ईगो में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ही देखेंगे और जो नहीं है उसे भी मानना शुरू करेंगे. Thank you so much, sir. Thank you. Amazing. Welcome. Anyone wants to ask any question? I want to ask, जो second half of the prayer है वो twin hearts में included नहीं है, तो क्या उसको हम कभी अलग से भी बोल सकते हैं? Yes, बोल सकते हैं. Can I get the screenshot? आपको इंटरनेट पर भी मिलेगा. It's Okay. easily available. Or I'll put it in the group also. Atma Namaste. Namaste. I have a question. Can you speak on the chakras associated with the lines? I would love to talk about it, but it will take a longer time. So, and there are non-pranic healers also, I believe, in the session. So, कभी बाद में हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे. Special sessions, sir. Special session. Aditya ji, Sir. special sessions.
जिसमें आप सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी को चक्रा से रिलेट करेंगे. जरूर जरूर. Wonderful session. Wonderful session. Since we Thank had you so very much. quick, yeah. Atma Ma'am, Namaste. would you Sorry. please include, would you send the link to the group? Yeah, I'm not part of your group. Okay, you're not the part of our group. I'll share. I have a question, Aditya ji. Yeah. This is Jasmine. Firstly, thank you for the lovely session. मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि वी कैन बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, लेकिन अगर अंदर मन में ही अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि पीस नहीं आ रहा है, सो देन हाउ डू वी प्रे दैट मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस? बिकॉज हम अंदर से शांत नहीं है तो हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकते हैं? मतलब मुझे इसमें हमेशा से ही ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहा है. So इसके लिए क्या है कि internally as a soul we are at peace. We have to just realize that. अभी हमारा ध्यान कहाँ पर है? On all our external affairs, whatever is happening externally, our consciousness is focused outward. Okay. So what is expected, you have to turn inward, inside, and look at your own self, that is your soul, which is that internal peace. Now the soul is resonating at the peaceful level, and you are resonating on the outer level. Outer level. हाँ. ये meditation किस लिए करना है? Prayer किस लिए करना है? To connect to your inner self. Yes. Got When it. you connect, it is internally peaceful. Yeah. Thank you. Thank you. Welcome. Any more questions? Ma'am, can you please share your group link, please? I have sent my contact number on the group, on the chat box. You can copy my number and then you can message me for the group link. Yes, yes. Thank you, ma'am. It's on the creative also, the contact number. Thank you, Adit, for such a wonderful session, for the deeper understanding of the St. Francis prayer. We have been doing this prayer every day in Twin Heart meditation, but today we got a very different understanding about the prayer, and I hope it will benefit all the people who are attending the session. And when they are doing the Twin Heart meditation, they will be able to understand the prayer and do the blessing. Thank you for such wonderful session, and hope to have another session for pranic healers. Definitely. When you are free, we'll chat on the WhatsApp. Sure. Would you like to do the closing invocation? Yeah. Thank you. Once again, thank you, Prerna and entire team for organizing this beautiful short session. I actually loved it to have a simple 15-20 minutes talk. So we'll close the session with a lot of happiness. Put your hands on the heart, smile. Try to feel inner peace. Try to connect to your own. Try to connect to your divine self. Silently say, God, make me an instrument of your peace. To the Supreme God, we thank you. My spiritual teacher, we thank you. All the great ones, we thank you for your priceless blessings, for divine guidance, divine love, healing power, help, and divine protection. In full faith, we thank you. Gently open your eyes. Thank you. Once again, thank you so much, Adit. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Atma so much. Namaste. Thanks a lot. Namaste.